बोल ब्रह्मानंद हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको स्वागत करते हैं। क्लास में Hare Krishna. So today we are going to have discussion on card throat competition. All of you have attended the session 3C. What are the 3C? Conditioning and card throat competition. Before we start, I have short prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Shapadantikam Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी भाष्यास्त्रविशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So there is another name of this topic, that is so the another name of the topic is break through the bond. So every living entity in this material world, they are bound by the condition. What is the condition? What is the condition? Condition क्या है? Class to 986. Many times you are in the class, but we are not hearing. So then there is no actually change in our life. It's very important that when you are coming in the class, we attentively hear. Hearing is the first process of receiving knowledge, especially spiritual knowledge. And if you don't hear regularly, don't hear very attentively, then your consciousness, your heart is not going to change. And there will be no change in life. People are working hard, but they are not hearing spiritual knowledge. It is said that if you do not
perform your spiritual duties, which is meant for human form of life, then eventually you have to work hard. Because if you don't do your first duty, then you are forced to do the alternative. So animals are working hard and humans are also working hard. Why? Because they are not performing their duties. So choice is after us. So conditions are birth, old age, disease or death. Can you change by any other technique or material advancement? Can you stop old age? Can you stop aging? Can you stop disease? No. And then conditionings. What are the conditionings? What are the conditionings? Conditioning क्या क्या है? Lust, greed, anger, envy, jealousy, hatred, laziness, nidra, alas, pramad. So they are the conditioning. And a living entity by the influence of all this conditioning became slave of their senses and performing many sinful activities involving very bad habits. And according to that, they have to transmigrate in different species. They have to transmigrate, they have to accept different bodies and suffer the reaction of their karma. So thus, soul is bound. Soul is bound by the conditions and then above that there is a cutthroat competition. So the science and technology, communication, economy has advanced so much, but people are involved in cutthroat competition. So much competition. So competition creates what? Fear. Competition creates fear. So society has advanced so much in externally, but people are living with complete fear, threat. Is it a human life? Is it a human life? Is it a happy life? Happy life? So we are trying to be happy but we are getting education from college and universities, but we are preparing for fearful life, entering into threatful life. So the topic is how to break through. Human life has been given an opportunity to break through, cut down this chain. Conditioning, cutthroat competition. In the spiritual world, there is no birth, death, old age, disease. The spiritual world, they do not have material body. आपने सुना है पहले भी examples. Narad Muni can fly from one planet to another planet. Spiritual body. Lord Krishna, when he was giving the lecture of Bhagavad Gita, his age was 125 years old. But he is looking like 14 to 16 years. So there is no old age, there is no disease in the spiritual world.
So spiritual world, the living entities are liberated. Lord is liberated, भगवान मुक्त हैं, और जो भगवान के शरणागत हैं भक्त लोग, जैसे नारद मुनि जैसे महान भक्त लोग, वो भी मुक्त अवस्था में रहते हैं. तो मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने. The devotees of the Lord, they are extremely rare. So they are completely liberated, and sudurlabha prashantatma, they are always happy. They are not in anxiety. क्या होगा? So therefore it's very important that we practice spiritual life and we break through this bond, birth, old age, disease and death, conditioning and cutthroat competition. So human life has been given an opportunity to break through. And if we do not practice spiritual life, then we have to suffer in this world also, and we have to continue keep suffering. So that is human intelligence. That is human intelligence. Take this opportunity and have a permanent solution. So we see in the animal kingdom, the animals are fighting for food. Correct? So one animal is food for another animal. The fish is fearful that a big fish will come and swallow me. And the deer and other creatures are fearful that the bigger animal or the stronger animal will come and eat me out. So we see the small kitten. क्या कहते हैं? Kitten कहते हैं? Kitten, when it is searching for food, how it looks? फिर उधर भाग जाते हैं. Yes or no? So it is searching for food and it is always fearful. So in the animal kingdom, the law is, there is a law, jiva jivasya jivanam. Jiva jivasya jivanam. So one animal is food for another animal. And getting the food is not so easy in the animal kingdom. जैसे एक बाघ होता है, बाघ बोलते हैं हिंदी में. बाघ को एक हिरन को प्राप्त करने के लिए 12 दिन अपेक्षा करना पड़ता है. 12 दिन के बाद उनको in average 12 to 15 days the tiger has to wait to catch a deer. ऐसे नहीं कि डियर घूमता रहता है, मैं आपका फूड हूँ, ब्रेकफास्ट महाप्रसाद गोविंद कर लो. So he has to actually do very lot of hard work. हम लोग नेशनल जियोग्राफी पे देखते हैं, बहुत मजा लेते हैं और लग रहा है कि कितना आसानी से उनको मिल गया. लेकिन the fact is the tiger has to try for 12 to 15 days to get his next 15 days meal. उसको पकड़ के उसको रख देता है, फिर 15 दिन खाता है, उसके बाद दूसरा मिलता है. समझ में आ रहा है? So if the tiger and the lion have such condition, what to speak about
other animals. So, so thus, the animal kingdom, there is a cutthroat competition. There is a fight for food, and there is always threat and fear. But in the human society, there is a security. Like morning, your breakfast is arranged by your parents, or we are sitting here nicely hearing, and the prasadam is cooked by the devotees. So this higher peaceful life, higher means this peaceful life has been given for what purpose? The peaceful life has been given so that your food is arranged. Because the human being is the highest form of life. So, the human being, the intelligent, higher intelligence has been given. Their basic necessities. आपको सोचना नहीं पड़ेगा कल जाके मैं कहाँ सोऊंगा, रात को जाके कहाँ सोऊंगा, है कि नहीं? खाने का, सोने का, basic necessities are arranged by the nature's law. It is arranged. Not like in the animal kingdom, so much cutthroat competition. ऐसे नहीं कि सुबह आपका ब्रेकफास्ट होगा और ब्रेकफास्ट का प्लेट लेके छीना छीनी लगेगा, एक प्लेट के पीछे 5 लोग, करेक्ट? ऐसा होता है? मोस्टली नहीं होता है, even in the poor country also. So God has, by nature, God has given the natural supply of food, so that people can focus for self-realization. People can focus for God realization. That is why it is said that human body is meant for break through the bond. The animal species, you cannot practice spiritual life. The human life, the other things are arranged so that we can practice spiritual life and cross or go back to the spiritual world. So when God created the human being, He created the human being exactly according to His form. भगवान के जैसा शरीर, सबसे श्रेष्ठ जीव को जब बनाया, अपने जैसा शरीर प्रदान किया और बुद्धि प्रदान की। नहीं तो जीवात्मा क्या होगा इस भौतिक जगत में ही बना रहेगा। तो इसलिए utilizing the facility, especially the human form of life, and practicing the God realization, self-realization is very, very important. And when you do not do that, eventually we go through cutthroat competition. When people do not spend their time for God realization or self-realization, they has to come down from the higher platform to lower platform. Higher platform to lower platform. When you do not perform your human duty, naturally your animal will come out. Your animalistic nature will manifest. And today's world, people think they are intelligent. They are working hard, they are intelligent. But actually they are fool.
because they are working hard, not working smart. So, God supply all the food grain. And when you become more faithful towards Krishna, will there be क्या कहते हैं scarcity? See, you just see our small center of voice, and in our voice we are spending almost, I saw the accounts, we are spending almost 18,000 rupees per month for non-voice devotees prasadam classes, and none of the money, the money which we are spending is earned by us. Then who is providing? You understand? Neither voice devotees are giving money for those prasadam, nor we are earning. Who is supplying? When you serve Krishna, Krishna is Lakshmipati. कृष्ण के कोटा, कृष्ण के कोष में कमी नहीं है, लेकिन जब कृष्ण विमुख हो जाते हैं, जनस्य कृष्ण विमुखस्यैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, कुमार को बोल रहे थे ना, the reason of our suffering, हमारे दुख का कारण हम लोग खुद हैं, दूसरा कोई दुख नहीं दे रहे हैं, हम लोग खुद अपने कारण से दुख भोग रहे हैं। तो जब हम लोग कृष्ण विमुख होंगे तो अधर्मशीलस्य, अधर्म का आचरण करेंगे, और उसका कारण क्या होगा? सुदुःखितस्य, सुखस्य नहीं, सुदुःखितस्य, सुंदर तरीके से आपको दुख मिलेगा, समझ आए? This is the nature, this is the laws of nature. You cannot change the laws of nature. Nature is working under the Supreme Lord, supervision. माया अध्यक्ष न प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करते हैं। प्रकृति बहुत कठोर है, आप ब्रेक करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो डिवोटीज आर नॉट फूल, भक्त लोग मूर्ख नहीं है कि वो भगवान को और भगवान के प्रतिनिधि को ओबे करते हैं। दैट इज सिविलाइज्ड लाइफ, दैट इज ह्यूमन लाइफ, करेक्ट? दैट इज लाइफ इन नॉलेज, इन हायर कॉन्शियसनेस। So today's world, we see people are so much involved in caught up foolishly in cutthroat competition. The cutthroat competition which is happening in the animal society, which is not supposed to happen in a human society, but it is happening currently in the human society. We see that the big business organization, they are swallowing the small business organization, and they are fearful how will survive. ऐसे नहीं कि बड़े व्यक्ति का पैसा कम ही है, उसके बाद छोटा व्यक्ति को खा लेता है। They are abundant, they should be happy whatever they have, but they are not happy, they want to eat up others. लाइक जियो मोबाइल कंपनी दूसरे सारे कंपनी को खरीद लिया है, ये सन। सिमिलरली व्हेन वी सिट फॉर प्लेसमेंट और इंटरव्यू, फियरफुल, क्या होगा? एक सीट के लिए 1000 लोग बैठे होंगे। व्हेन वी सिट फॉर गवर्नमेंट जॉब, बाप रे बाप, पहले ही समझ लेते का चांस नहीं है, बहुत रेयर है, वो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार किसी को मिल सकता है, ऐसा सिचुएशन हो गया।
हम लोग जब छोटे थे, मैं जब पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में, ऐसा सिचुएशन नहीं था। और ना हम मतलब सबको ऐसा फीलिंग था ग्रेजुएशन करेंगे जॉब मिल जाएगा। लेकिन दिन जैसे जैसे जा रहे हैं कंपटीशन और टफ कंपटीशन हो रहा है। नाउ दिस कंपटीशन फॉर व्हाट? दिस कंपटीशन इज फॉर व्हाट? यस और नो? इतना दिन पढ़ाई करके कंपटीशन फूड के लिए। उससे तो पशु लोग अच्छा है, पढ़ाई नहीं किया। एकदम पहले ही कंपटीशन में घुस गया। समझ में आ रहा है ना? और उसमें उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है आपसे, आपका केवल थियोरिटिकल एक्सपीरियंस है। समझ में आ रहा है ना? So this is the situation. Actually, in the Vedic age, there was no unemployment. वैदिक युगों में कोई क्या कहते हैं जॉबलेस नहीं था। The society was built in very intelligent way as given in the Vedas. चतुर्वर्णमया सृष्टा गुण कर्म विभागसा। The four varna and ashram, the basic necessities are supplied. The knowledge is supplied by brahmanas. The protection, the security is supplied by the kshatriyas. And then the vaishyas are supplying food, vegetables, grains and clothing. And then the shudras, they used to provide the क्या कहते हैं shram, hard work. So people used to work according to their nature. Everybody have their nature. Intellectual class, administrative class, business class and working class, labor class. These four classes are existing today? Existing or not existing? They will be always existing. They were existing before, they are existing now, they will be existing in future also. And according to that quality not by birth, this varna and ashram has been made. And different people have different necessities, bodily needs. That's what according to that they have their ashram, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas. Everybody cannot become sannyasi. So they can enter into household life. So thus everything was nicely taken care, everybody was performing their duties and therefore everybody was employed. Even ब्राह्मण लोगों को खाने के लिए चिंता नहीं करना पड़ता था कि वो लोग काम नहीं करते थे, केवल शास्त्र का अध्ययन करते थे, उसका प्रैक्टिस करते थे और उसका वितरण करते थे विदाउट एनी सैलरी। बिना सैलरी से काम करते थे और उनको किसी भी चीज का अभाव नहीं होता था। अगर अभाव होता भी था, क्योंकि उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया, उसे जीवन जिया है, they were satisfied even in scarcity. उनको पता था कि greed is the cause of my conditioning, and therefore they used to happily perform the austerity. तो क्योंकि उनके जीवन के परम लक्ष्य पता था, इसलिए मटेरियल प्लेटफॉर्म में अगर कुछ कमी का सामना करना भी पड़े, वो स्पिरिचुअल लाइफ को गिव अप नहीं करते थे और इसके कारण वो लोग सुखी रहते थे। समझ में आ रहा है? हाँ। तो आज के जमाने में we see that there is so much cutthroat competition. There is so much cutthroat competition in every level. Either you go in sports or in social activities or in job, or even getting admission in college.
so much competition. पहले एडमिशन लेने के लिए ऐसा कंपटीशन नहीं रहता था. हाँ, अभी जॉइंट एंट्रेंस में बैठ के उसमें कितना 2-3 साल ड्रॉप लगाकर कितना कंपटीशन है. उसके बाद कौन सा कॉलेज मिलेगा, so much layer, so much fear. हाँ, 1 साल 2 साल ड्रॉप लगता तो लोग डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेते हैं. इतना कम उम्र में इतना प्रेशर. This is the education system. So because the society, the system is made based on satisfying the senses, enjoy, sense gratification, and therefore competition. Understood? So the cause of cutthroat competition, which was there in animal society, it is coming to human society, is envy. There is 2 reasons. One is envy, another is greed. So when our life approach is very much materialistic, when our education approach is very much materialistic, only for our livelihood, or not livelihood, only for our sense gratification, and then there is so much competition. So people are envious of each other. One country is envious of another country. Now you know the highest degree of education. What is the highest degree of education in India? Doctorate. And you know what service the person gets after doing doctorate in India? Making bomb. So after getting highest degree of job, doing highest degree, and your degree, your education, your talent is used to envy another country. And what their country is doing? They are doing the same. समझ में आ रहा है? So thus envy is creating cutthroat competition. Envy is creating. Now suppose you have everything. You have degree, you have money, and you have nice development of facilities, but everybody is involved in cutthroat competition. Will there be any happiness? बाहरी रूप से लग रहा है कि हम लोग बहुत एडवांसमेंट किया है. आप जाइए सुबह 7 बजे, 7 बजे ये क्या कहते हैं, मेट्रो स्टेशन में जाइए, पैक्ड अप भरा हुआ है. सुबह 7 बजे निकल गया. प्रभुपाद बोलते हैं, because in America, Prabhupada says that in such a advanced society, in the best country in the world, morning 6 o'clock they are going out for food, traveling 2-3 hours, working in factories or industries for getting food. So this is animals, they wake up morning and then go for food. In the human society, people are waking up early in the morning and they are going out for food. Then Prabhupada says, morning time is meant for spiritual practice. It's God realization. That freedom has been given to human body, human being, not to the animal. But such a poor, painful situation that from morning only they are going out for food. So the point is that if we don't practice spiritual life and learn self-control and understood the goal of life, we are either you are passed out from this college or that college, you become engineer or doctor, you are going to lead cutthroat competition life. You are going to lead threatful life.
you are going to lead animalistic life. Okay, we need to study and make a good result, but unless we practice spiritual life, we cannot make ourselves safe from this pathetic condition. As soon as you enter into your college, you suppose you get job. First we are fighting, cutthroat competition for getting job, and after getting job there is a target. Kuch akshay bro. I have seen how now अभी क्या है, लोग दिन में काम नहीं करते हैं, नाइट शिफ्ट, और नाइट शिफ्ट में जॉब करेंगे. अभी क्या है, तो नाइट शिफ्ट नहीं, अब क्या करते हैं, क्या डिफरेंट शिफ्ट, रोटेशन शिफ्ट. पागल हो जाता है आदमी. आपके रूम में ही है रोटेशन शिफ्ट, 2 दिन नाइट शिफ्ट और फिर अगला दिन आपको डे शिफ्ट. 2 दिन नाइट शिफ्ट जॉब करेंगे तो तीसरा दिन आप डेड हो जाते हैं एकदम. आदमी, उसका दिमाग क्या काम करेगा, नींद नहीं हुआ ठीक से, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा. और काम नहीं करेंगे तो काम तो करना ही पड़ेगा, टारगेट भी फुलफिल करना पड़ेगा और गाली भी खाना पड़ेगा. दूसरे जॉब में फिर भी थोड़ा सा लोगों से डीलिंग होता है, और ये आईटी कंपनी में तो केवल मशीन के साथ ही डीलिंग होता है, और इसलिए डिप्रेशन लेवल सो हाई. अंडरस्टैंड? सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल सिचुएशन. आपको लगता है भक्ति क्या करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ कितना, विशेष करके जो आईटी कंपनी वालों का, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लाइफ का प्रैक्टिकल सिचुएशन इतना टफ है, दे आर नॉट एबल टू हैंडल ओनली. इसलिए दिन में 10 to 15 सिगरेट बाहर आके के वो सोचता है कि मुक्त हो गया, लेकिन उसने क्या किया एक्चुअली, उसका प्रॉब्लम को और. So that the point is that if you don't have the natural way to live, bring out your stress. What is that? Mantra. Man matlab mind and tra means trayote. Maha mantra. Bhavaushadhat shratta manobhiramat. Bhavaushadhat. It's a medicine. And it gives pleasure. मनोभिरामात, आनंद प्रदान करते. कौ उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यत बिना पशुघात. Who is that suicidal person not taking up Krishna consciousness? So if we do not take up spiritual life regular basis, we are going to lead a frustrated life, no matter how successful you may be. Definitely we want all of you get successful, but unless you practice spiritual life, it is like a समुद्र में आपको लाइफ जैकेट दे दिया, रहे इधर जा, लाइफ जैकेट है तेरे पास. समुद्र में अगर आपको फेंक दिया जाता है लाइफ जैकेट से, पानी खाते रहो, मरोगे नहीं. समझ में आ रहा है? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लाइक ए बोट. जब तक बोट में नहीं चलोगे, लाइफ जैकेट भी हो जाए, जॉब भी मिल जाए, काट थ्रोट कंपटीशन करके, और जॉब के बाद काट थ्रोट कंपटीशन, और So the reason of this cutthroat competition is envy. So because of envy, people are fighting with others in different level, either individual level or collective level. Like India is always threat. Pakistan attack करेगा, China attack करेगा, correct? Ukraine is in fear, वो रशिया अटैक कर रहा है. So cutthroat competition. अरे उनके पास क्या कमी है, तो क्यों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं? एनवी एक पहला कारण है. एनवी जीव जीवस्य जीवनम.
But in the spiritual world, what is the principle? Spiritual world का rule क्या है? Spiritual life का rule क्या है? जियो, जीने दो. आप जिए, दूसरे को जीने दो. जियो, जीने दो. So there is a verse. आपने सुना होगा ये वर्स बहुत बार. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. ये भारतवर्ष की संस्कृति है. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. उदार चरितानां वसुदेव कुटुम्बकम. All human being is our kutumba, our family members. Sarve jana sukhino bhavantu. Let everybody become sukhi. So there is no envy. There is a verse. प्रहलाद महाराज is saying 5.18.9. कोई निकाल सकते हैं क्या? 5. श्रीमद् भागवतम 5.18.9. So Prahlad Maharaj is saying that let every living entity become calm and satisfied. Let every living entity become calm and satisfied by practicing bhakti yoga and think about others' welfare. So you cannot give up envy. विश्वस्य कला प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिव मिथोदया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे अभेशतां नो मतिरोऽपि अभेतुकी. Somebody can read. May there be good fortune. May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all envious person become. Who is saying? Who is saying? Prahlad is saying. And where he was born? In demoniac kingdom. So demoniac kingdom, though he was born in demoniac kingdom, because his association with Narad Muni, devotees, he became devotee. And because he is a devotee, he is preaching to his classmates, demoniac friends, don't be envious. See everyone in equal vision. Give up the duality of friendship and enmity. Shatru mitra ka bhav त्याग करिए. Duryodhan was seeing Yudhishthir Maharaj, Pandavas as his enemy. But Pandava did not saw Kauravas as their. Generally, give the teeth for. That is the nature of envy. That is the nature of materialistic consciousness. But when somebody practices spiritual life genuinely, he becomes free from the quality of envy. Even somebody envy him, he will not envy back. And will there be any loss? कोई सोच सकता है मेरा ईर्ष्या करेगा, दोष करेगा तो मेरा नुकसान होगा. Yes, naturally लोग सोचते नहीं, हमें भी उनको मारना चाहिए, नहीं तो अपना रक्षा कैसे होगा. Did Yudhishthir Maharaj did like that? And what is the result? उसके कारण क्या हुआ? युधिष्ठिर महाराज को सब खोना पड़ा. Krishna took care of it. So when you become faithful towards Krishna and lead such a value based leadership quality, Krishna will protect you. Krishna is the ultimate protector. Whole world surrendered to Yudhishthir Maharaj. All the great kings became subordinate to Yudhishthir Maharaj. He became the king, unparalleled king of the entire planet. So God has supplied abundant.
And we should be satisfied whatever God has given. And we should not envy others. तो पढ़िए. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga, or by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Therefore, let us all engage in the service of Supreme Transcendence Lord Sri Krishna and always remain absorbed in thought of Him. So unless you practice devotional service, you will not be able to think for each other's welfare. When we do not practice spiritual life, we become selfish. And we envy. Like we see, two brothers are fighting for the property. See, there is a blood relationship. But is it common nowadays? Yes. Why? One time, his guest Radheshyam Prabhu, he was invited in one home, in rich family, very rich man. तो उनके घर में गए. He was invited for some program, and then he found that his two sons are fighting for the property. ठीक है. उनका एक घर गांव में था और एक घर शहर में था. ठीक है. अभी उन्होंने बांटवारा कर दिया कि आप ये ले लो, आप ये ले लो. किसी को तो देना पड़ेगा ना. Now the brothers are fighting. नहीं मेरे को चाहिए. बोले नहीं मेरे को चाहिए. आपने उनको शहर वाला घर क्यों दिया, वो फ्लैट क्यों दिया, मैं गांव में क्यों रहूंगा. And they are very terribly fighting. See, they have everything, but they are fighting. काट-थ्रोट कंपटीशन चालू हो गया. सब कुछ है, उसके बाद भी काट-थ्रोट. हम लोग सोचते हैं कि गरीब होता है तो काट-थ्रोट कंपटीशन होता है, पैसा नहीं रहेगा तो काट-थ्रोट कंपटीशन. इसलिए भागते रहो, अपना क्या कहते हैं जुगाड़ करो. So Radheshyam Prabhu, he could understand, sense it, that something wrong is going on. Then he asked the rich man. The rich man was looking very happy outside, but then he expressed his everything. सब कुछ बोल दिया उनको कि this is the situations are happening in my home. So साधु को सब कुछ बोल सकते हैं. So kindly help. So then immediately Radheshyam took that opportunity, and then he spoke about the glorious quality of Lord Ramachandra. So Ramachandra was going to become the king next day, and Kaikeyi did the mischief, and because of that he has to go for forest. He was banished. But what Ramchandra did? Ramchandra did not go into cutthroat competition. नहीं मेरे को मिलना चाहिए, मैं राजा हूँ, मैं बड़ा हूँ. He sacrificed very happily. Why? Because he was detached. Why he was detached? Because he was attached to Krishna, the Supreme Lord Himself. So, and seeing such wonderful quality, Bharata felt ashamed. He was actually not looking for that, but he was feel ashamed. Everybody wanted to go with Ram only. हमें अयोध्या नहीं चाहिए. जहाँ पर राम है वहाँ पर ही अयोध्या है. रामचंद्र के इतने सुंदर गुण, निस्वार्थ भाव. भगवान ने लंका विजय किया और राजा बन गए खुद. लंका विजय किया, विभीषण को राजा बनाया. एक भक्त ने पूछा कि प्रभु अगर रावण ने आपका शरण ले लिया तो क्या करेंगे? बोले मैं उनको अयोध्या दे दूंगा. समझ में आ रहा है? This is the Lord. And when you practice devotional service of such Lord, you also manifest such divine quality. This only can make the society happy.
You might have money, but unless you practice bhakti, you cannot make your life happy. You will be caught up in the cutthroat competition because of having animalistic quality. अगर भक्ति नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर लोहे को बाहर फेंक के रखोगे तो क्या होगा? जंग लगेगा. उसी प्रकार भक्ति नहीं करोगे तो क्या होगा? भौतिक जगत के सारे गुण दुर्गुण, भौतिकवादी लोगों के संग करेंगे तो वैसे दुर्गुण हमारे अंदर आ जाएगा और ऐसे ही गिरे हुए दुखमय जीवन जिएंगे. तो hearing this wonderful quality of Lord Ram, these two brothers feel ashamed and then immediately says कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी जो इच्छा वो करिए. पिताजी को कहा. And they become so happy immediately by hearing. So this is the effect of hearing, how their heart got changed. तो इस प्रकार वैष्णव लोग ऐसे काट थ्रोट कंपटीशन जो ईर्ष्या से भरे हुए हैं उससे मुक्त है और वो सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं. तो अगर हम लोग भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तो हम लोग इस काट थ्रोट कंपटीशन से नहीं निकल पाएंगे. कृष्ण कहते गीता में सर्व जोनिषु कौन्ते मूर्तयो संभवान्ति जात आशाम ब्रह्म महो जोनिर अहम बीजो प्रदो पिता. कृष्ण से सर्व जोनि, I am the father of all living entity, not just human being. मनुष्य को रेस्पेक्ट करो और मुर्गा मछली उसको पकड़ के खा लो. This is envy. So human being became more envious than animal. अभी का सिचुएशन ऐसा हो गया. But the Vaishnavas, they can see everyone as a son of or the children of God. They can see everyone in spiritual vision as a soul in connection with the Supreme Lord. And therefore, even there is a external differences, Indian, American, black, white, rich, poor. Like Srila Prabhupada, he traveled all over the world. But he did not discriminate, distributing the knowledge of Krishna consciousness. He has presented the philosophy in the universal platform because this knowledge is already in the universal platform. The bodily differences are his materialistic platform. But the spiritual platform, everybody is equal. So when we have this knowledge of Bhagavad Gita and we practice the knowledge of Bhagavad Gita, naturally you become free from envy. One person said that this Swamiji have created a home. ऐसे घर बनाए जो पूरे विश्व के लोग आनंद से रह सके. We are searching for such type of home. Everybody is looking for such type of home. आश्रय. घर का नाम तो दिया जाता है आश्रय, लेकिन सब लोग तनाव में रहते हैं. If there is no God in the center, if there is no राम को भगा दिया आपने जंगल में, कैसे उधर राम राज्य होगा? काट-थ्रोट कंपटीशन होगा. So that's what spiritual life is very, very important. Second reason of competition is greed. So Prabhupada लिखते हैं ईशोपनिषद में, there is a fight between communist and capitalist. Communist capitalist जानते हैं? तो कैपिटलिस्ट के पास क्या रहता है? बहुत पैसा रहता है और उसके कारण क्या होता है? बहुत साधारण व्यक्ति बहुत क्या कहते हैं, गरीबी में जीवन जीते हैं. तो नया एक इज्म आ गया, नया एक रिवोल्यूशन आ गया, कम्युनिज्म.
कम्युनिज्म कहते हैं कि सब कुछ देश का प्रॉपर्टी है और इसको इक्वली एक सुनने में अच्छा लग रहा है, हाँ? बहुत देश का प्रॉपर्टी है, आ गया लेनिन का कम्युनिज्म आ गया, तो सब बंटवारा हो रहा है। लेकिन जब बंटवारा हो रहा है, जहां कहां पर इधर थोड़ा जा रहा है, इधर ज्यादा जा रहा है, इधर कम जा रहा है, इधर ज्यादा जा रहा है। गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन करते हैं, उसके लिए इतना अमाउंट सैंक्शन करते हैं, ऊपर से नीचे तक आने के लिए आधा पैसा गायब हो जाता है, दिखाया जाता है इतना, और मिनिस्टर लोगों का, हाँ, और बाकी उसके नीचे उनके चेला लोगों का पॉकेट में सब चला जाता है। ये सुनो, तो जितना भी हम लोग कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में लड़ाई करके कम्युनिज्म का इज्म एक थ्योरी, हाँ, एक फिलोसफी निकाल लेंगे, लेकिन जब तक हम लोग ये सिद्धांत, ईशोपनिषद का सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक काट थ्रोट कंपटीशन बना रहेगा। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? वुड यू लाइक टू हियर? प्लीज रिपीट दिस वर्स। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगतां जगत् तेने तप्तेन भुञ्जिता मा गृद कस्य सिद्धवनम्। ईशावास्यम इदं सर्वम, ईशा मतलब ईश्वर, उससे इस्कॉन नाम आया है, इस्कॉन, इस मतलब ईश्वर। ईशावास्यम इदं सर्वम, सर्वम मतलब सब कुछ, सब कुछ किनका है? ईशा, ईश्वर का प्रॉपर्टी है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। देयर इज अ वर्स इन भागवतम, जन्मादिजस्य इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञो स्वराट। जन्मादिजस्य, जो सब कुछ के आदि है, इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। कुछ भी नहीं था, भगवान थे, और भगवान से सब कुछ सृष्टि हुआ। इज अ सीड, देयर इज अ ट्री, बट ट्री मैनिफेस्ट बिकॉज ऑफ द सीड। द होल क्रिएशन मैनिफेस्ट बिकॉज ऑफ द सुप्रीम लॉ। ही इज द सीड, गर्भ दक्षाई विष्णु। So this verse, Ishopanishad, very this is actually topmost Upanishad in all Upanishad. Upanishad डायरेक्ट भगवान से आया है, इसको कहते हैं श्रुति। उपनिषद सारा श्रुति से आता है, जो भगवान से डायरेक्ट आया है। तो ईशावास्यम इदं सर्वम, तो ईशोपनिषद गिविंग 18 मंत्र, हाउ यू कैन बी रिमेन कृष्ण कॉन्शियस इवन इन द मैटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में रह के कैसे एक आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं, पशु के जैसा जीवन नहीं जीकर, उसका मंत्र दिया है, अलग अलग मंत्र। उसमें से फर्स्ट मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है। तो अभी क्या करना चाहिए हमें? तेने त्यक्तेन भुंजिता, उतना ही भुंजिता मतलब भोग करना चाहिए। मां गृद कस्य सिद्धनम, जितना आपका कोटा है। जब आप सोचेंगे कि नहीं ये सारे प्रॉपर्टी मेरा है, या जब कोई व्यक्ति सोचता है ये सारे प्रॉपर्टी देश का है, तब क्या होता है? हमारे भोग वृत्ति नहीं जाता है। लेकिन जब हम लोग सोचते हैं कि भगवान का है, सब कुछ भगवान का प्रॉपर्टी है, भगवान सब कुछ के भोक्ता है। अभी सब कुछ देश का है, तो भोक्ता कौन है? हाँ, हम लोग देश चला रहे हैं, हाँ, इतना कष्ट करके वोट जीता है, उतना आसानी से जाने देंगे क्या? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये जो देश का प्रॉपर्टी, जो क्या कहते हैं कम्युनिज्म, उससे समस्या का समाधान हल नहीं होता है। तो इसलिए जब तक ईशावास्यम इदं सर्वम इस प्रिंसिपल का पालन नहीं करेंगे, कृष्ण सेंटर लाइफ लीड नहीं करेंगे, कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं जिएंगे, तब तक ये काट थ्रोट कंपटीशन स्टॉप नहीं होगा।
तब तक हम लोग ग्रीड जो कंडीशनिंग है उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग कृष्ण कॉन्शियस बने। When we become Krishna conscious, we become naturally satisfied, or our senses become satisfied. There is a verse, a very famous verse, Prahlad Maharaj is saying, Matirna Krishne parato satova mithopapadded griha vratanam adanto gobir vishatam tamishram puno puno charbito charbonanam। तो प्रहलाद महाराज कहते थे छोटा सा बच्चा, वो भी डीमन डायनेस्टी में जन्म हुआ है, तो कह रहे मोतीर्ना कृष्ण परतो सतोबा। अगर आपकी मति कृष्ण में स्थिर नहीं होता है, मोतीर्ना कृष्ण परतो सतोबा मिथोपबद्धित गृहो व्रतानाम अदांतो गोबीर, गो मतलब इंद्रिय, अदांतो मतलब, दांतो मतलब दमन करना, और अ मतलब ना, आप अपने इंद्रियों को कभी भी दमन नहीं कर पाएंगे। अदांतो गोबीर विश्वताम तामिश्रम, और इसके कारण क्या होगा, इंद्रिय भोग के लिए आप पुनः पुनः चर्बितो चर्बोनानाम, बार बार चबाया हुआ चीज को ही, सेम सेंस ग्रेटिफिकेशन को ही आप बार बार एंजॉय करने के लिए प्रयास करेंगे। मैटेरियल वर्ल्ड क्या करता है, सेम सेंस ग्रेटिफिकेशन को नया प्रोडक्ट में डाल देता है, नया पैकेजिंग करके डाल देता है। वही ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। सेक्स लाइफ किसके फॉर्म में आ गया है, ब्लू फिल्म के फॉर्म में आ गया है। टेक्नोलॉजी, साइंस, कम्युनिकेशन इतना एडवांसमेंट करके क्या किया है, ब्लू फिल्म बना दिया है, और सारे पोर्नोग्राफी बना दिया है। तो लोग और डिग्रेडेड वे ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम लोग भगवान में हमारे मन को स्थिर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग पशु के जैसे सेम सेंस ग्रेटिफिकेशन को करते रहेंगे। हम लोगों को लगा कि हमने भोगा नहीं है, पहले एंजॉय नहीं किया है। मूवी दिखाया जाता है, अलग अलग मूवी या स्पोर्ट्स, तो मूवी में क्या दिखाया जाता है, मैन वुमेन रिलेशनशिप, दिस इज सेक्स लाइफ। उसमें क्या होता है, कि दूसरे का पत्नी के साथ हीरो का अपना पति, क्या कहते हैं, पत्नी है, और हीरोइन का दूसरा पति है, और वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और तो हम लोग बाहर में किस देख रहे हैं, अंदर में क्या चल रहा है, और हम लोग वो देख रहे हैं कितना सुंदर है। सब कैरेक्टरलेस लोगों का एक्टिंग हम लोग देख रहे हैं, और उसका इफेक्ट क्या होगा, तो समाज की डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार मोतीर्न कृष्णे परतो सतोवा मिथोपबद्धित गृह वृतानाम अदांतो गोबीर विश्वताम तामिश्रम। तामिश्रम मतलब तम, अंधकार, और अंधकार से अंधकार जीवन में या डेस्टिनेशन में जाएंगे, नरक की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए अगर हम लोग कृष्ण में मति स्थिर नहीं करेंगे तो इंद्रिय संयम नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप ग्रिड से नहीं बच सकते हैं, और ग्रिड से नहीं बच सकते तो काट थ्रोट कंपटीशन से भी नहीं बच सकते। तो इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम, जो सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर सब कुछ के भोक्ता है, इसको प्रैक्टिस करना जरूरत है। और इसको प्रैक्टिस कौन कर सकता है, जो नेचुरली कृष्ण भक्त है, आसानी से कर सकता है। जो कृष्ण भक्त है नेचुरली, वो उनको पता है कि सब कुछ कृष्ण का है, और इसके कारण कृष्ण की सेवा करके वो संतुष्ट रहता है। उनको आर्टिफिशियली कोटा निर्णय नहीं करना पड़ता है, ये इनका है, ये इनका है, सब कुछ कृष्ण का, नहीं लेना चाहिए, ऐसा बहुत थ्योरेटिकली उनको करना नहीं पड़ता। नेचुरली ही जितना जरूरत है
हालांकि कृष्ण कॉन्शियसनेस में कृष्ण उनके भक्तों को और अबंडेंट देते हैं। समझ में आ रहा है? जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण उनको और सप्लाई करते हैं। और भक्त क्या करते हैं? अपने रूम में सब रख के देता है। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करता है। व्हाई यू आर गेटिंग प्रसाद एवरी वीक फ्री? हमारे पास तो पैसा नहीं है। मैं आपको बोला ऑलरेडी 18,000 रुपया खर्चा होता है, मंदिर में क्लास होता है। दिस इज स्मॉल यूनिट। इस्कॉन के अंदर स्मॉल यूनिट, ऐसे नहीं कि इस्कॉन सप्लाई कर रहा है। Devotees have their big heart because they're servant of Krishna. Krishna have big heart. Prabhupada have big heart. And therefore his followers also have big heart, and therefore they are serving, distributing prasad. Although the students are not so interested to attend the classes, but still they have not stopped supplying prasad. This is a mercy, this is opulence. कहाँ पर free supply होता है? बोलिए. That's what is the kingdom of God. ये भगवान के राज्य हैं। भगवान के राज्य में ईर्ष्या नहीं है। भगवान के राज्य में काटथ्रोट कंपटीशन नहीं है। भगवान के भक्तों के समाज में ईर्ष्या भाव नहीं है, ग्रीड नहीं है। उनके अंदर है कौन सा ग्रीड? कैसे मैं कृष्ण की सेवा ज्यादा कर सकता हूं, कैसे मैं कृष्ण को गुरु को संतुष्ट कर सकता हूं, कैसे मैं कृष्ण की सेवा कर सकता हूं। अगर हम लोग कृष्ण के भक्ति नहीं करेंगे तो ऐसे ही लो क्लास, लो क्वालिटी, लो कॉन्शियस लाइफ लीड करेंगे। लाइफ बिकेम स्वीट, ब्यूटीफुल व्हेन यू हैव हायर कॉन्शियसनेस, नॉट मनी। On the other hand, Krishna will supply you. Krishna will supply you. Krishna only narrow-minded people do not take up Krishna consciousness. Only narrow-minded people, they are envious of Krishna, and therefore they are thinking that I am the doer, I am the enjoyer, I will arrange my everything, and they don't accommodate Krishna devotees in their life. So therefore, the greed is the reason of cutthroat competition. But the Isha Upanishad says, the Isha Vasam Idam Sarvam Jat Kinchit Jagatam Jagat. So everything belongs to Ishwar, and we should practice this principle in our life. And it's become very easy when you practice spiritual life. When you chant Hare Krishna, when you associate with the devotees, naturally such quality comes. Naturally you become very happy seeing such wonderful people, seeing such a good divine quality people leading such a wonderful life. So thus we become free from this suffering animalistic society. So now if we do not practice spiritual life, then what is the result? Is cutthroat competition. If we give up our higher responsibility, naturally we have to do hard work. Devotee does not need to do the hard work. Devotee obviously are responsible. Devotees are responsible for their duties, either spiritual or material, but they don't involve in cutthroat competition because they know the goal of life is to going back to Godhead. Material world is दुखालय। तो आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, इसको आप लोग पढ़िएगा। तो इसमें आपको मिलेगा देखिए, we are given this human form of life, last page, not to work hard like ashes, swine and the dog, but to attain the highest perfection of life. If we do not care for self-realization, the laws of nature force us to work very hard, even though we may not want to do so. If man fails to discharge his duty as a human being, he is forced to transmigrate to the hellish planet and take birth in this
discarded species of life to work hard in the ignorance and darkness. If one wants to elevate himself to progressive direction, then one should take to Krishna consciousness seriously, especially in this human form of life, and utilize all his potentials to prepare himself to return back home, back to God. अगर मनुष्य जीवन में जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कृष्ण कॉन्शियस होने का, कृष्ण भक्ति करने का, अगर हम लोग उसको नहीं करेंगे, ऐसे तो इस जीवन में काट थ्रोट कंपटीशन और दुखमय जीवन भुगतना पड़ेगा, और मृत्यु के पश्चात पशु का शरीर प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। पिछले जीवन में नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज का इंजीनियर था, अभी उसी कंपनी का नीचे बैठा हुआ है कुत्ता। अरे प्रभु जी आप, अरे तुम्हारा क्या हुआ, तुमको बोला था क्लास में आने के लिए। ठीक है, so don't repeat the history. Krishna consciousness is a mystery. Krishna consciousness is a mystery, and if you don't practice, then you have to repeat the history. If you don't practice the mystery, then you have to repeat the history. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Last just 8 minutes. So we have arranged this STW course in Kharagpur just to make one reason, one important